ठीक है सर ऑलराइट यस सर आप ये अब आईजीसीसी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जी तो मैं लीव करूं सर? मेरा नहीं तो नहीं नहीं काम। नहीं 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 नहीं, ये तो क्वेश्चन मेंसुरेशन तो ये तो आप लोगों का भी है ना, अच्छा अच्छा, सही है सही। ये तो आप लोगों का भी है ना, आप लोगों को पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। चलें जी स्टार्टिंग Bismillahirrahmanirrahim. They say that the diagram shows a horizontal container for a water with a uniform cross section. This is the cross section. ठीक है अली, ये cross section है इस पाइप का. The cross section is a semicircle. ये एक semicircle है. The radius of the semicircle is 0.45 meters and the length of the container is 4 meters. और length of the container जो है मेरा बेटा अली वो 4 meters लंबा container है. Agree? Examiner is saying calculate the volume of the container. Remember one thing, if you have the cross section, so you can easily get the volume of any particular container. क्योंकि याद रखें it's a kind of a prism और आपने सिर्फ करना क्या है कि वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी प्रिज्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये फॉर्मूला आपको मिला होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ द प्रिज्म, लेंथ ऑफ द प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए वी नो दैट क्या नाम है अली, that this is circle, so it would be pi r square divided by 2. Agree or not? Yes or no? And multiply यस with length of the prism. So we got the idea that the value of radius is 0.45 whole square whole divided by 2 multiply with 4 meters which is the length. So use करना है कैलकुलेटर को बहुत efficiently, ब्रैकेट ले लिया, फ्रैक्शन लिया, शिफ्ट एंड पाई दबाया, r square means multiply करना है 0.45 ब्रैकेट क्लोज विद अ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बड़े ब्रैकेट को क्लोज करें, मल्टीप्लाई कर दें इसको 4 के साथ एंड द आंसर फॉर दिस इज 81 डिवाइडेड बाय 200 पाई। तो मैं एग्जामिनर को थोड़ा सा आंसर ऐसे भी शो कर दूंगा, एग्री। अब एस एन डी दबा के 3 सिग्निफिकेंट आंसर दे देंगे उसको। सो 3 सिग्निफिकेंट आंसर जो कैलकुलेटर पे आ रहा है वो आ रहा है 1.27। तो 3 सिग्निफिकेंट आंसर आपका हो गया 1.27 मीटर क्यूब इज द आंसर फॉर दिस थिंग। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? यस और नो? यस सर। एंड वी नो दिस ऑलरेडी, मैंने आपको कुछ स्केल्स पढ़ाए हैं और वो ये पढ़ाया था मैंने आपको यमुना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है बेटा 1 लीटर के। एग्री और नॉट? यस वो किसके बराबर होता है बेटा? 1 लीटर के। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 वेरी गुड, इट इज 1000 लीटर्स। तो आपको नजर आ रहा है कि यमुना ये 1.27, इसका मतलब है कि 1270 लीटर्स पानी जो है ना इसको इस कंटेनर से कैरी कर सकता है। एग्री? यस तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का मैथ्स है, तो इसलिए कोशिश करा करो, डिस्कशंस करो। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने पे फोकस करता, मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने पे फोकस करता हूँ। ओके, दे से दैट इन द नेक्स्ट पार्ट द डायग्राम शोज the greatest depth of the water in the container is 0.3 meters. The diagram shows the cross section. Calculate the number of liters of water in the container. Give your answer incorrect to the nearest digit. Okay, now you got the idea Ali कि पानी जो है वो सिर्फ इतना ही है जितना इन्होंने शेड किया है। एग्री और नॉट अली? यस सर। Okay, now you got the idea here that Mushgan and Arum, that I need to find out this area. But now there is a problem here. The problem is that I have the radius. I have the radius which is 0.45. So Arum, according to the question, I can see that my radius is 0.45. So these two dotted lines would be 0.45 and 0.45 each. Do you agree with me or not? Yes or no? Yes, sir. Okay, Arum, you can see one thing, that the length from this point to this point is 0.45. So if I subtract 0.3, I can get this point as well. Agree or not? So Yes. 0.45 Ramin minus 0.3. So their distance would be 0.15. Do you agree with me or not? Yes, Yes, or no? जी Okay, sir. that's 0.15. Okay, now I get the idea that I need to calculate the area because I have the total area of this semicircle. All I need is to eliminate this white part, finding the area of the white part. So you can see one thing, everybody. If I just connect this line with that area and connect this line with that area, I can see that I have these two triangles available. Agree or not? Yes or no? सर ये ट्रायंगल्स कैसे, वो दूसरी लाइन तो टेढ़ी है।
बेटा आप जरा थोड़ा सा एक फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? जी सर। इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? मैं थोड़ा सा इसको शेडर को थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि जरा मैं सही तरीके से शेड कर सकूं। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? यस सर। ओके, क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? यस सर। Yes, okay. So I got the idea that Ramin, I have one sector in this form. Can you see that, Ramin? Yes, sir. I have this one sector in this format, and this length is 0.45. This length is also 0.45. Agree or not? These two are the radiuses. And I have these two right angle triangles in which one of the dotted length is 0.45 and another one is 0.15. Agree? 0.15. Agree? Yes, sir. Okay, I want to find out the area of A1, A2, A3, and A4. I want to find out the area of these four. So what I'm going to do is I'm going to just use this right angle triangle and I'm going to use the trigonometric ratios inside, because Vadan, we know that this is a right angle triangle which I extracted Sir. out. Agree or not? I extracted this triangle outside. Agree? यस सर। जी यमुना, आप कुछ कह रहे हैं? 0.15? जी सर। सर, ये आपने जिस तरह बाहर निकाला है ट्राइंगल को, तो ये जरा दोबारा बता देते हैं, मुझे इसकी सही समझ नहीं आई। देखें मेरा बेटा, आप जरा क्वेश्चन को देखें, ये बॉस क्वेश्चन है, ठीक है? इससे ज्यादा डिफिकल्ट केस आपको जी नहीं सर। मिलेगा पेपर में, ठीक है? तो सब देखें, मैं एक दफा दोबारा कर रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया काइंडली प्लीज पे अटेंशन। Examiner is saying me that calculate the number of liters of the water in the container. I can find out the water in the container if I have this area. Agree or not? यस सर। मेरे पास टोटल मौजूद है, मैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करूं तो टोटल आ जाएगा मेरे पास। डू यू एग्री विद मी और नॉट? जी सर। I want to find out the white part. मुझे white part find out करना है. So in order to find the white part, Arum, I'm gonna just drag a line here and drag a line here as well. And I got the idea that these two are the radiuses, like these two dotted lines. Agree or not? अब क्या हुआ? अब ये हुआ बेटा कि that मैंने इस right angle triangle को out किया, ठीक है? और इस सेक्टर को आउट किया, जो सेक्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखे थे। वी गॉट द आइडिया हियर रामीन दैट दिस इज 0 पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर क्योंकि ऊपर वर्किंग है। 0.45, this is also 0.45, this is 0.15 length, this is 0.45, this is also 0.45. I'm gonna find the area of these two pieces. So what I'm gonna do is I'm gonna extract this right angle triangle outside, and I'm gonna just see that this is 0.15 and this is 0.45. Ramin, we know that in trigonometry this is hypotenuse. If I want, because I want to find out this angle, because that angle is gonna help me to find out the sector. Agree? जी The सर। side opposite to the angle is perpendicular and the third side is base. So we know that we have some people have curly brown hair through proper brushing. We have these three formulas. Some people have curly brown सर hair through proper brushing. Yes, Simon? I have a hypotenuse available. I have base available. So I can use cos theta easily. So cos theta is what? Cos theta is equals to base divided by hypotenuse 0.15 divided by 0.45. जी सर साइन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ बेटा, माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ 0.15 डिवाइडेड बाय 0.45। तो cos इनवर्स ले लेंगे ताकि ये थीटा आ जाए। यमुना, शिफ्ट एंड cos इनवर्स फ्रैक्शन 70.5। तो 0.15। बेटा आप अपना कनेक्शन ठीक करो, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मैसेज भी देख रहा हूँ। 0.45। मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आई होप आपको समझ तो आ रही है। सो द आंसर इज 70.5। तो वदान 70.5 लिख देंगे यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो वदान यहाँ पे अगर हम 70.5 लिखें तो वदान इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एग्री? वो होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड। 0.45 को मल्टीप्लाई कर लें 0.15 के साथ और इसके दरमियान का जो साइन है साइन 70.5 लिख लें तो एरिया निकल आएगा। एग्री और नॉट? Yes or जी no? सर। जी So जी। area of the triangle is out. So I can write 0.5.
multiply with 0.45, multiply by 0.15, multiply with sine 70.5. Avinash, you're saying something? No, sir. I was just saying that it was a radius given. Yeah, a radius is given in the question. So 0.0318 is the area of this one shape. So I'm going to find out A2 as well. This is A1. So A2 would be the same 0.0318. I'm going to take 3. So we know that, Ramin, that we have these two triangles available. So we got the two areas for them. Any problem, Ramin? No, sir. Triangle दो हैं तो इसीलिए दो निकाले हैं. Arom, is this clear to you? Yes, sir. We are going to use this answer later onwards. Okay, so now everybody please pay attention. I'm going to zoom in the shape now. So now you can see that, Arom, that this angle is 70.5. This angle is what? 70.5. So the total angle would be how much? 90 or not? So 90 minus 70.5 would be the other part or not? This is Yes, sir. 70.5. So can I get this angle now, everybody? Yes or no? Yes, sir. Vadan. Yes, sir. तो वदान ये सेक्टर में यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ. ये 0.45 है, ये भी 0.45 है. अब ये थीटा निकालने के लिए 90 में से 70.5 को माइनस कर लें. 90 माइनस 70.5, 70.5. The answer is 19.5. Mujgan, we know that how to find out the area of this kind of a shape. It is theta by 360 multiply with pi r square, 0.45 square. Mujgan, understand? So the fraction Sir, ये वाला part 19.5. किस तरह की? बेटा ये वो सेक्टर है ना, देखो पिज्जा स्लाइस है ना, तो थीटा बाय 360 Yes, sir. मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर किया ना. Okay, okay. ठीक है. सो अभी फ्रैक्शन 19.5 डिवाइड बाय 360. बेटा प्लीज यूज योर कैलकुलेटर. स्क्रीन पे कैलकुलेटर यूज करने में टाइम लगता है. पाई ब्रैकेट 0.45 स्क्वायर, 45 मिस हो गया, 45 स्क्वायर. सो द आंसर इज 0. वदान इसका एरिया क्या है बेटा? 0.03445. ठीक है. ये वदान ये A3 है, तो क्या A4 भी सेम होगा कि नहीं? यस सर, फिर टोटल एरिया में से 0.0 ये माइनस कर देंगे. वेरी गुड. तो टोटल एरिया में से ये तीनों माइनस करने हैं हम लोगों ने. दिस इज A3. ओके, सो वी आर सर, गोइंग टू. काफी मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन? बेटा मुश्किल है, लेकिन ये A स्टार वाले बच्चों का क्वेश्चन है. ठीक है, जी 6 सर. मार्क्स दिए हैं, जरा देखते हैं तो सही ना क्वेश्चन के. जी सर. सो टोटल एरिया कितना था बेटा? टोटल एरिया था पाई आर स्क्वायर, वो हम लोगों ने ऊपर निकाला था. तो टोटल एरिया मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे एक दफा दोबारा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, साइन एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2. तो वो आ गया है पाई 0.5 स्क्वायर divided by 2. So let's do that in the calculator now. Shift and pi. Arom, can you hear me? Divided by 2. So around the total area in front of me is 0.3180. I'm not going to disturb this answer. So I'm going to just write that working for the examiner. Okay, because the question has 6 marks. So total is 0.318 minus all. Minus all will work. Okay. So minus triangle 0.0318 minus 0.03 G beta 18. Sir, why are you finding area, sir? Shouldn't you find the volume? Beta, if I don't have the area, I cannot find out the volume. Oh, I yeah, need right. the area of the cross section. Minus now two sectors 0.03445 minus 0.03445. So now that's the area for this white part. Okay, so sorry, this shaded part. So minus is, so the answer is 0.18558 meter square is the area. Now examiner is asking me calculate the number of letters. Now we know that the length of the prism is given in the question, which is 4 meters. So the volume would be 0.18558 multiply with 4. Answer multiply with 4. So Vadan, it is 0.74234 meter cube is the volume. Agree or not? Yes or no? Yes sir. Now we got the idea
that we got the idea that it is meter cube. I want to convert it into the liters. So multiply with the 1000 because 1 meter cube has 1000 liters. So it is 742.3 liters. So 742.3 liters. And according to the give your answer correct to the nearest integer. So 742 is the nearest. Agree everybody or not? सर मेरे पास तो डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है 742। आपके पास डायरेक्ट आया आंसर यही आया? जी सर यही आया। तो बस ठीक हो गया ना, वर्किंग हमारी सही। मैंने पॉइंट्स लिए थे ना ताकि कोई गलती ना हो। So I hope this is the boss question. This is the one of the difficult cases of mensuration. और इतना मुश्किल नहीं था. All you had to use your brain. आपने सिर्फ अपने ब्रेन को यूज करना था कि that इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है. So I hope it's fine. और I will request all of you to attempt this question one more time after the class. ठीक है? Okay, sir. Proceeding. Okay, it's the same question. They say that question 33. It's a trigonometry and mensuration. Sorry. It says that the area of the rectangle is 29 centimeters square greater than the area of the square. So it means that beta, you need to understand one thing, that area of rectangle, it is equals to area of square, but the area of rectangle is 29 centimeters square greater. So we have to add 29 centimeters square, 29 to the area of rectangle. Yes or no? It means that area plus 29, it is equals to area of 2. Area of rectangle is what? X minus 1 into 2x plus 1 plus 29, and the area of a square is what? X square, which is length square. आपको area का formula आना चाहिए. Length into breadth plus 29. Okay, they say that the difference between the perimeter of two shapes is k. Find the value of k, and look at the question. Question is again of 6 marks. First of all, we need to find out what is the value of x. So हमें x की value find out करनी है. It's a multiplication of two brackets. तो पहले ये multiply होगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2x square plus x. फिर आप ये multiply होगा तो minus 2x minus 1 plus 29 is equals to x square. x square को यहाँ पे ले आए. 2x square minus x square minus x minus plus is plus आएगा बड़े का साइन. 29 minus 1 is 28 is equals to 0. It is x square minus x plus 28 is equals to 0. मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को चेक कर लें. मिड टर्म ब्रेक इज पॉसिबल और नॉट. 1 into 28 is 28. Factors of 28 are 128, 214, 3 times 3 में नहीं आता, 4 times 7. Okay, then we do not have any factors जिसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें. We have to use the quadratic formula. हमें quadratic formula इस्तेमाल करना पड़ेगा, which is given in the paper. Minus b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. So x is equals to negative b, so negative 1 plus minus square root. B value is negative 1, so negative 1 square minus 4. A value is 1 and the C value is plus 28. So whole divided by 2 and the value of A is 1. Ramin, can you hear me or not? जी सर. Any problem? सर सर ये इधर कहा तो नहीं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. बेटा कंडीशन क्वेश्चन में पहली लाइन में गिवन थी. वो कह रहे थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 29 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर. और फिर सर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो ग्रेटर है ना एरिया ऑफ स्क्वायर से. फिर ये क्या है? x minus 1 ब्रैकेट 2x plus 1. देखें आप थोड़ा सा एक चीज को अंडरस्टैंड जरूर करें. देखें क्वेश्चन में कंडीशन उन्होंने कहा, मुझे पता लग गया, सॉरी. हाँ जी, उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 29 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो ग्रेटर है. क्या है? ग्रेटर है. अच्छा, हमसे एक गलती हुई है. ये चीज जरा अंडरस्टैंड करें जरा थोड़ा सा. यहाँ पे एक गलती हमसे हुई है. थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. They are saying that the area of the rectangle is 29 centimeter square greater than the area of the square. तो हमें 29 जो है वो स्क्वायर में ऐड करना चाहिए था. एग्री और नॉट? Rectangle would be equals to square, Vadan. And they are saying that area of rectangle is 29 centimeter square greater than the area of the square. तो इसका मतलब है 29 हमें स्क्वायर के साथ ऐड करना चाहिए था. एग्री और नॉट? Yes, sir. क्योंकि इक्वल करना है ना. In order to make them equal,
I have to give something to the square, and that something is 29. Agree? So Yes. x minus 1 times length into width hota hai 2x plus 1. It is equals to x length square plus 29. अब वही सेम रहेगा 2x square minus x plus x minus 2x minus 1 is equals to x square plus 29. Send both of them to the left side. So 2x square minus x square plus x minus 2x is minus x minus 1 minus 29 is equals to 0. X square minus x minus 30 is equals to 0. अब ये मिड टर्म ब्रेक से भी होता है क्योंकि 6 5 are 30 and 5 minus 6 is also 1. Agree? So x square plus 5x minus 6x minus 30 is equals to 0. X is common, x plus 5 minus 6 is common, x plus 5 is equals to 0. X plus 5 is common, x minus 6 is equals to 0. Drag a line, x के दो आंसर्स निकाल लें. X plus 5 is equals to 0 and x is equals to minus 5. X minus 6 is equals to 0 and x is equals to plus 6. So Vadan, the value of x is a positive negative 5 and positive 6. We will take positive answer. Okay, length cannot be negative. Okay, Okay, sir. so this is the answer because length cannot be negative. Agree? Now they are asking that the difference between the perimeter of the two shapes is k. Okay, so now Ramin, this is 6, so ये भी 6 हुआ, ये भी 6 हुआ और ये भी 6 हुआ. Agree or not? जी सर. तो बेटा perimeter of square क्या आ गया? Sum of all sides. X Agree? plus 24. plus 6 20. 24 सेंटीमीटर आ गया. अच्छा, perimeter of rectangle, x की वैल्यू पुट करनी है. Perimeter of rectangle. So यमुना 2 6 are 12, 12 plus 1 13 आता है. Agree? Yes. और 13 यहाँ पे भी होगा. Okay, 6 minus 1 is 5. तो 5 यहाँ पे भी होगा. Agree? तो 5 plus 5 is 10. 10 plus 13 plus 13 is 36. Very good. 36 centimeter. Now they say that the difference between the perimeter of the two shapes. Okay, difference means minus. So 12. 36 minus 24 is equals to k. So the k is equals to 12. So 12 is the answer for this question. Value of 12 आई है. तो इसका मतलब क्या है? देखो इस पूरे क्वेश्चन में we have used the area and the perimeters of square and rectangle only. Understood? Yes, और sir. ये क्वेश्चन टेक्निकली जो है ना, ये गिफ्ट क्वेश्चन है. यकीन करें, क्वेश्चन टेक्निकली इट्स अ गिफ्ट क्वेश्चन बिकॉज 6 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के. अंडरस्टूड? Yes, sir. Proceeding. C. That is what the algebra and the mensuration. Acha. The volume of the larger cube is 5 centimeter cube greater than the volume of the smaller cube. Okay, now I got the idea that volume of the cube is volume of large would be equals to volume of small. But the volume of the large cube is 5 centimeter cube greater. So I have to give 5 centimeter to what? To the smaller one. Do you agree with me or not? Yes or no? Ramin, beta समझ आया ये condition का? जी सर. The volume of the large and volume of the small, they can only be equal if I give 5 centimeter to the small one, so they both will be equal. Agree or not? जी सर. Volume of the large would be length cube, which is y plus 1 whole cube. Agree? And volume of the small would be y cube plus 5. Agree or not? Yes or no, Rami? जी सर. Now we know that y plus 1 whole cube is what? It is multiplication of 3 brackets. It is what? It is what? Multiplication of 3 brackets. 3 brackets को multiply करना है, तो हम लोग ये रफ में कर लेते हैं यहाँ पे. तो y plus 1 whole cube. बेटा जिसको नहीं आता तो ये सीख लें. y plus 1 O levels का भी हिस्सा, IGCSE का भी हिस्सा है. सो उमर पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को ब्रैकेट में बंद करो. ओके, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. नाउ मल्टीप्लाई विद y प्लस 1. अब पहले y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उमर पूरी ब्रैकेट के साथ. तो ये आ जाएगा y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y. अब 1 की बारी, तो प्लस आपने किस तरह किया, मतलब y जो आपने किया पहला वाला जो ब्रैकेट
बेटा ये ऑब्वियसली बात है, देखिए अलजेब्रा का बड़ा बेसिक पार्ट था। y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू वन वाई, वन वाई, वन इंटू वाई ओके इज y, एंड वन वन जर वन। अब प्लस वन की बारी है यमुना, तो प्लस वन को मल्टीप्लाई करो तो प्लस वन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आएगा, प्लस वन टू वाई से मल्टीप्लाई होगा तो टू वाई आएगा, प्लस वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन ही आएगा। सो वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन, so that is the rough working for this bracket. So the answer is y cube plus 3y square plus 3y plus 1 is equals to y cube plus 5. बेटा I can cancel y cube and y cube, ठीक है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 3y square plus 3y plus 1 minus 5 is equals to 0. 3y square plus 3y minus 4 is equals to 0. Result shown. Agree or not? We have to show that, और हमने शो कर दिया। Understood रामीन? जी सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब निकालना है, तो पहले हमें y निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? y निकालना। क्योंकि y लेंथ है ना, तो वदान माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। मिड टर्म ब्रेक ट्राई करो। थ्री फोर जार 12। 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 12 2 6 एंड 3 4। तो थ्री कौन सा ऐसा फैक्टर इस्तेमाल करूं कि जिसमें हमारे पास 3 आ जाए? मिडिल टर्म नहीं आता। सर एक सवाल यस प्लीज। सर, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते जबकि ये बेटा पेपर ट्राई में। तो करना चाहिए ना, प्रैक्टिस में तो ट्राई करें ना, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर में आपको मिड टर्म ब्रेक आएगा। ठीक है, अच्छा सर। मैं तो प्रैक्टिस में ट्राई तो करवाऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेटर में डालना शुरू कर दूं तो फिर तो आपकी मैथ सब भागेगी खाली। सी वदान, दिस इज द केस। यहाँ पे यू कैन नॉट यूज मिड टर्म ब्रेक बिकॉज आई कैन नॉट गेट 3 बाय सेलेक्टिंग एनी प्रॉपर पेयर। अग्री? यस सर। So I have to proceed the question with a quadratic formula, which is x is equals to minus b minus 3 plus minus square root b square मतलब 3 square minus 4, value of a is 3 and the value of c is negative 4, whole divided by 2a। अब देखें कैलकुलेटर में मेरे पास टेक्निक है। अब आप लोग कैलकुलेटर के शौकीन है तो देखें जरा प्लीज। मेन्यू, मैं मेन्यू में जा रहा हूँ। मेरे पास मेन्यू में इक्वेशन जो है इट इज एट 9, सॉरी इट्स एट ए, तो आई एम प्रेसिंग ए बटन ऑफ माय कैलकुलेटर। आपके कैलकुलेटर में ये आपको मिलेगा प्रेस मोड 5 एंड 3 पे। यू कैन गेट दिस एट प्रेस मोड 5 एंड 3। अंडरस्टूड? Now check, the value of a is 3, value of b is positive 3, value of c is negative 4, and my answer for x1 is right in front of you. ठीक है, but I cannot rely on this answers because examiner wrote it very clearly। Vadan, show all your workings। तो आपने workings show करनी है, ठीक है यमुना? यस So x is equals to minus 3 plus minus, पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। 3 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट अली 3 डाल के ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट माइनस 4 डाल के ब्रैकेट बंद। सो द आंसर इज 57। स्क्वायर रूट के अंदर 57 आएगा, नीचे 6 आ जाएगा। अब दो दफा लिखें। x1 is equals to minus 3 plus square root 57 divided by 6, और x2 लिखें minus 3 plus minus square root, सॉरी माइनस स्क्वायर रूट 7। रामीन समझ आ रही है वर्किंग कैसे शो करनी है? जी सर। ओके अभी आप कैलकुलेटर की मदद से आपके आंसर निकाले हुए थे मैंने भी, तो आप भी निकाल सकते हो। आप लोग कैलकुलेटर में पूरा भी डाल सकते हो। माइनस 3, हाँ पहले फ्रैक्शन ले लेता हूँ। फ्रैक्शन minus 3 plus square root 57 divided by 6. My answer for x1 is 0.78, 0.7583, and my x2 is just do the editing, remove this plus sign and add minus, so it would be minus 1.75. So beta, just tell me one thing, length cannot be negative, so positive answer I have to take. Agree Ramin? जी सर। तो y का ये टेक्निकली हमने y के आंसर्स निकालने हैं। हम लोगों ने फॉर्मूले में x x लिखा है लेकिन टेक्निकली इट्स y है। अच्छा ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? y इज इक्वल्स टू 0.7583। so what I'm going to do is bacha, I'm going to take the cube of this answer because we have to find the volume of the smaller cube। हमें smaller cube का आंसर निकालना है। so 0.7583 और ऊपर लिख देते हैं क्यूब
So the final answer is 0.436. ये मेरे पास final answer आ रहा है. Volume is equals to 0.4360. 2 decimal places तक आंसर देना है तो 0.44 centimeter cube is the volume of the smaller cube. Still till second decimal place. वदान समझ आई है? जी सर। आगे चलते हैं जी. अच्छा जी, ये तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन आ गए. चलें ये क्वेश्चन करते हैं. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. A rectangular sheet of paper ABCD is made into an open cylinder with the edge AB. अब देखें, मैंने आपको उस दिन पहले भी बताया था कि rectangle is the shape, ठीक है, is technically the net of the cylinder. If you fold a rectangular paper, you will get a cylinder with open cylinder. Top and bottom उसका नहीं होगा, ठीक है? Okay. AD is 28. So we got the idea that Vadan, this is 28. So this is total 28. Agree or not? And Avinash, this is BC. So this is technically BC here. Agree? Then we know the idea that this is 20. This length is 20. So Vadan, this is 20. So this is the height of the cylinder. Do you agree with me or not? Yes sir. कोई rocket science नहीं. This is 20 centimeter, the height of the rectangle. I want to find out the radius of the rectangle, which is technically the circumference of this circle, and circumference of this circle is equals to 28. We got the idea that this circumference is equals to 28. So 2 pi r is equals to 28. I'm finding the radius now. So divided by 2 pi on both sides. So यमुना समझ पड़ी है बेटा कि radius कैसे निकल रहा है? 28 Yes. divided by 2 pi, shift and pi, and the answer is 4.456. So till 3 significant figure, first, second, third. After 5 it's 6, so I have to add 1 to that. So r is equals to 4.46 shown. Calculate the volume of the cylinder. It's a piece of cake now because we have the radius 1 over 3 pi r square h. That's the formula. 1 over 3 pi, radius is 4.46 square and the height is 20. So रामीन कैलकुलेटर में वैल्यूज डालते हुए बहुत ख्याल रखना है. अच्छा बच्चा, 1 over 3 into pi arom. सही Getting है. it? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आरएच नहीं होता क्योंकि ओपन है ना. Oops. Thanks. Mistakenly मैंने यहाँ पे कौन का फॉर्मूला लगा दिया. Thank you. Volume of the cylinder is pi r square h. आपने भी फॉर्मूला गलत बताया. वो सर्कल, आपने जो फॉर्मूला बताया वो आप मुझे कर्व सरफेस एरिया बता रहे थे, ठीक है? ओहो हाँ. The volume of the cylinder is pi r square h. So pi and the radius is 4.46 square and the height is 20. So V is equals to shift and pi bracket. बेटा सब जरा एक्टिव बैठे हैं. रामीन के अलावा सब बच्चे सो रहे थे. 46 square and times 20. Laluna, can you hear me? It's 1249.82. जी सर. So 1249.82. So till 3 significant figure, third significant is 4. So 1250 is the answer. Now what they say, n is the point on the base of the cylinder. Okay, I can see that. They say that decide that bn is the diameter. Okay, calculate the angle between an and the base of the cylinder. अब जरा सब गौर करें बेटा please. Everybody, this is important, and sign this is important for you as well. N is the point on the base of the cylinder. Base of the cylinder के ऊपर ये base of the cylinder के ऊपर ये point है, ठीक है? And B to N is the diameter. ये diameter है. Okay. Calculate the angle between AN and the base of the cylinder. So Ramin, we have to calculate the angle between these two dotted lines. Okay. And Yes. this is technically a right angle triangle. Understood, Arom? So we have the values now. So all we need to put the values. Beta, we know that the radius is 4.46. So diameter would be the double. So 4.46 times 2. So my diameter is 8.92. Okay. My height is 20. I need to find out this angle. Vadan, side opposite to the angle is perpendicular and this is base. And in tangent theta, we have both of them.
So tangent inverse of perpendicular divided by base. ठीक है वदान? So shift and tangent inverse fraction 20 divided by 8.92. 20 divided by 8.92. So the answer is 65.9. So this is 65.96. 0.96. So till one decimal place, if I round 9, so it would be 66.0 degree. Understood everybody or not? Yes, Understood? sir. Proceeding. Okay, the volume of the solid cone is 310 centimeters cube. The height of the cone is twice the radius of its base. All right, so let's make a cone now. Arom, can you hear me? Arom, this is the radius, and this is technically, Laluna, this is technically the height of the cone. Do you agree? Yes, sir. They say that the height of the cone is twice the radius. So can I say that h is equals to 2r? Can I say that? Yes or no? Yes, sir. They say that calculate the volume of the cone is given. Can you see that? The volume of cone is 1/3 pi r square h. मैं जब भी फॉर्मूला लिखा करूं बेटा मेरे साथ फॉर्मूला पढ़ा करें अपने रूम में. Volume is 310 1/3 pi. Radius is r square and height is 2r. Do you agree with me or not? So 3 will go there. 310 times 3 is equals to pi r 2 pi r cube, because आपका पाई आर स्क्वायर जो है वदान 2r से मल्टीप्लाई होगा तो 2 pi r cube आ जाएगा. एग्री? नाउ I have to divide 2 pi on both sides. 2 pi cancelled. So r cube is equals to 310 multiplied by 3 divided by 2 pi. Vadan, I take a cube root now. Agree? Exactly, sir. So cube and cube root cancel. So r is equals to shift and cube root fraction 8 310 multiply with 3 divided by 2 and shift and pi. So the answer is 5.289. 5.2897. Okay, so I got the answer for this. Now calculate the slant height of the cone, and we know that sign that the slant height of the cone is this thingy. Agree or not? So this is the right angle triangle which I'm going to extract now. So Vadan, we got the idea that the radius of the circle is cone is 5.3 significant figure 5.29. Agree? Sir. And the height would be double. So multiply with 2. Answer multiply with 2. So that would be 10.57, which is 10.6. Agree? So let me find out the slant length with the Pythagoras theorem. Agree? So L is equals to square root of 10.6 square plus 5.29 square. So L is equals to square root of 10.6. यमना समझ आ रही है बेटा? Plus 5.29 square, 5.29 square, 29 squares. So the answer is 11.84. So slant length is 11.846. I have to write 11.8 as an answer. और आप देख सकते हैं यमुना कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला उन्होंने खुद ही दे दिया था. ठीक है? यस सर. तो मतलब सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जो है ना आपको मेंटली लगाना था इसमें. अंडरस्टूड? सर हम आंसर को राउंड नहीं करेंगे. जी आंसर को जो है वो राउंड नहीं करेंगे. बेटा 11.846 था तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 11.8 ही आएगा ना. यस सर. ठीक है, प्रोसीडिंग. ओके, ये एक इजी सवाल है तो उसको छोड़ता हूँ मैं, जरा डिफिकल्ट प्रैक्टिस करवाते हैं. अच्छा वैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट बहुत आखिर में थोड़ा सा ट्रिकी है तो स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद द रेडियस 6 एंड हाइट 14. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई रेडियस इज, बेटा कैलकुलेटर में डालें 6 स्क्वायर और हाइट इज 14. आंसर बता दें, आंसर बता दें बेटा. यार ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा. 504 pi. 158.3 से. अच्छा 504 पाई और आंसर एस एंड डी बताएं.
सर 1583.36 एक बच्चा बोले 1583.36 1583.6, ठीक है। अच्छा, सर a solid ये hemisphere, 0.36 जी रामी। सर ये क्या नाम है उन्होंने कहा था कि वॉल्यूम सॉलिड सिलेंडर का फाइंड करना ना, तो फिर सिलेंडर में तो उन्होंने आपको कहा तो नहीं है कि ये ओपन है, तो फिर बेटा सर्कल नहीं वॉल्यूम देखो, मेरी बात सुनो, सिलेंडर ओपन हो या क्लोज हो, वॉल्यूम पे तो फर्क नहीं पड़ता उसके। फिर वो सर्कल के हम वो फिर हम सर्कल का वो कब ऐड करेंगे? बेटा वो टोटल सरफेस एरिया में सर्कल्स ऐड होते हैं जब आप उसको पेंट करने लगो तो। ओह अच्छा ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें खुद को। अच्छा, अ सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस 6, हमारे पास स्फीयर का मौजूद है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं, वी विल डिवाइड द आंसर बाय 2, ठीक है। सो 4/3 pi r cube is 6 cube, so what is the answer? 288 pi. 288 pi. Now divide by 2 because it's hemisphere, so 144 pi. So 144 pi is equal to what? 452.38. 452.38, so that's the answer. A cylinder and hemisphere in part A are joined to form the solid in the diagram. The solid is made up of steel and 1 centimeter cube of steel has a mass of 7.85 gram. Show that 1 centimeter cube of steel has the mass of 0.700785 kg. अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरस्टूड? दे से दैट द सॉलिड इज मेड अप ऑफ स्टील, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो स्टील है ना, उसका जो मास है वो 7.85 ग्राम है। तो वो कहता है कि शो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील हैज अ मास ऑफ दिस मच केजी। तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए भी डिवाइडेड बाय 1000। एग्री और नॉट? यस और नो? तो 0.00785 kg आंसर विल कम एंड द रिजल्ट इज शोन। कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द सॉलिड, वी हैव द टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज टू, तो वॉल्यूम ऑफ दीज टू निकाल लें, ठीक है। ये दोनों सिलेंडर्स को उन्होंने निकाला है, तो अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और निकाल दिया, तो वॉल्यूम टोटल कितना हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ उसका आ रहा था 504 पाई साइन, और दूसरे का आ रहा था 144 पाई। एग्री? दोनों को ऐड कर दें, 504 प्लस 144 इज हाउ मच? फिर 648 पाए। 648 pi is the total volume. Okay, now every mass is we have to multiply, we have to give the answer in kg, so multiply with this thing so to get the total answer in terms of kgs. So 648 pi multiply with 0.00785, so what is the answer? 15.98. 15.98, तो 3 significant figure पे राउंड करूं तो 16 kg आता है। एग्री और नॉट? Yes, sir. 16.0 kg। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बच्चा? No, sir. All right. Aline, please turn on your mic, please, for a while. Yes, sir. Okay, Aline, read part C, please. Everybody, please pay attention. मैं किसी का भी mic on करवा सकता हूँ जी। 2000 centimeter cube of iron is melted down and some of it is used to make 50 spheres with radius 2 centimeter. Calculate the percentage of iron that is left over. So it means that we have the total volume available, ठीक है, which is melted down, agree, and they made 50 spheres, agree. So volume of 50 spheres, would be 50 multiply with 4/3 pi r cube, which is 2 cube. Any problem? So just find out the volume of the 50 cubes. 50 multiply with 4/3. Laluna, can you get this point? R cube is, Laluna, can you get this point? Ji, sir. Okay, so it's 1600 by 3 pi, which is in technically 1675.5 centimeter cubes. So Laluna, they are saying calculate the percentage of the iron which is left. So what is left? Total were 2000. 2000 minus 1675.5. So that is the leftover. So 2000 minus answer, it is 324.5. 324.5 centimeter cube is left. They want me to find out the percentage. So 324.5, total was 2000.
multiply with 100. I can cancel these two zeros. So answer divided by 20 only. Answer divided by 20. So that would be the answer. Vadan samajh aaya? 16.2% is the leftover. Baki use ho gaya. Okay. The iron leftover is then made into a cube and calculate the length of an edge of the cube. So you have the leftover volume. So it means that volume of the cube is equals to L cube. So Yamna, volume of the cube would be 324.5 because this is the leftover. Agree or not? Yes, sir. So taking cube root on both sides. So Ayla, cube root cancel. So L is equals to cube root of shift and cube root, which would be 324.5. You can make only the cube of the length 6.87 centimeter only. Okay. 6.87 centimeter. Understood, Arom, Hamza Amjid, Huria, Kushi, Saim, Umar. Yes. Understood? बेटा मैं दो दिन से एक चीज जी, ऑब्जर्व sir. कर रहा हूं. I'm observing few things that some of the students without even asking me they leave the class towards the end. ठीक है? So you cannot leave my room without even asking me. A solid cone has a radius 3r. Okay, a solid cone has a radius 3r. So Ramin, this is 3r radius cone. Okay. जी सर. तो आपने कोन बनाएंगे तो समझ आएगा. ठीक है. Okay, and the slant length is 9r. Okay. A solid cylinder has radius x. It has radius x. Arom, can you hear me, yaar? And the height is 7x. The total surface area of the cone is equal to the total surface area of the cylinder. Okay, nice. Vadan, can you hear me? See, he's out. Ayla. They say that total surface area of the cone is equal to the total surface area of the cylinder. What is the formula of the total surface area of the cone? Anyone? Anyone? Pi r L plus pi r square. Very good. And what is the formula for the total surface area of the cylinder? 2 pi r r L. h plus 2 pi r square. Good job. Now just put the values correctly. Values को correctly डालने. Pi r is 3r. L is 9r. Plus pi r is 3r square. 3r with the whole square is equals to 2 pi. R is x. Height is 7x. Plus 2 pi x square. ठीक है जी. Okay. Now 9 3s are 27r square. 27r square pi plus 9r square pi is equals to 2 7s are 14 x square pi plus 2 pi x square. So I have to make, given that r is equals to kx, so r को subject बनाना है. ठीक है. So 27 plus 9 is 36 pi r square, which is equals to 14 x square pi plus 22, it would be 16 x square pi. Agree, Rami? Ramin, I can cancel this pi and pi. Agree or not? So 36 r जी सर. square is equals to 16 x square divided by 36 on सर both sides. 36. जी इसमें बेटा. x स्क्वायर ऐड नहीं हो जाएंगे? मतलब आपने देखिए ये 14 x स्क्वायर पाई है ना प्लस 2 मेरा पाई बेटा x ये स्क्वायर x स्क्वायर पाई और x स्क्वायर पाई x स्क्वायर ये बेस है इसकी. आप इनको क्यों ऐड कर रहे हो? 14 plus 2 नंबर ऐड होता है. जी सर. R square is equals to 16x square divided by 36. Aram, what is the step I should take? Under root Yes, taking under root on both sides. Okay, what is the answer, Aram, on the right side? 4x by 6. Good job. It is 4x by 6. I can simplify, yes or no? 2x by 3. Yes or no? Yes, sir. So according to the question, r is equals to kx. So r is equals to 2 by 3x. So Mohit, the value of k is better 2 by 3. Value of k is how much? It is 2 over 3. Understood, bacha? Yes or no? Yes. Any problem so far?
Any problem so far? All right, next question. According to the question, examiner is saying, Hadi, can you read the question? Hadi? Hamza Amjad, can you read the question? Sir, the diagram shows a water through the in the shape of a prism. The prism has cross section in the shape of a isosceles trapezium. The trough is completely filled with water. Show that the volume of water in the trough And is 206.4 liters. so we need to find out the volume. So it means that we have to multiply the area of the cross section with the length. Agree? Agree, beta? Now, Ramin, I can see that यहाँ पे I have centimeter, but it's meter. So let's convert that. It can disturb my calculations. So 1.2 multiply with 100 would be 120 centimeters. Do you agree with me or not? जी सर So volume of the trough would be, it's a volume, so a base area multiply with length. Agree or not? So base area is a trapezium and area of trapezium is what, Laluna? What is the formula for the area of trapezium? 1 over 2? 1 over 2? Muid? What is the formula for the area of trapezium? Yamna? बेटा area of trapezium का क्या formula है? L1 plus L2, 50 plus 36 into height of the trapezium which is 40 and the length is 120. Calculator में सब कुछ put करें. Bracket 0.5 multiply with 50 plus 36 is 86, multiply with 86, multiply with 40, multiply with 120. It's all multiplication. So the answer is 206,400 centimeter cubes. Now we know that to convert this answer into liters, so 206,400 divided by 1000, so it would be 206.4 liters. Understood, Rami? जी सर The water from the trough is emptied at a rate of 600 ml per second. हर second 600 ml जो है वो पानी इसमें से निकाला जाता है, ठीक है? So you have this much ml available. Agree or not? Yes or no? These are the volume of the this particular container. Agree? And it is emptied at 600 ml per second. So I have to divide by 600 first. Divide by 600. So I got the idea that Ramin, that this will take 344 seconds. How much seconds? 344 seconds. अब 344 को डिवाइड बाय 60 करते हैं तो हमें मिनट पता लग जाएंगे. डिवाइड बाय 60 करते हैं, कैलकुलेटर में आ गया आंसर. ठीक है रामी, तो टाइम बटन दबा दो. तो 5 minutes and 44 seconds इज द आंसर. ठीक है, जी सर 5 minutes and 44 seconds लगेंगे इस पूरे ट्रफ को खाली करने में. ठीक है, क्योंकि तकरीबन 1 सेकंड के अंदर आधे लीटर से भी ज्यादा पानी जो है ना इससे बाहर निकाला जा रहा है. Okay, all the water from the trough is emptied with into a cylindrical tank, and the depth of the water in the tank is 84. Calculate the radius of the tank. So, beta, remember one thing. Like, let's suppose this is the tank. Agree, and this is completely filled with water. Agree. The depth of the water is 24. So let's say the height is 84. ठीक है यमुना? So volume of the cylinder is pi r square h. कितना volume आया था यमुना? 206,400 पानी आया है ना आपके पास? Pi यस सर रेडियस नहीं है, हाइट 84 है, आर को सब्जेक्ट बनाना है तो 84 और पाई को वहां पे डिवाइड कर दोगी. ठीक है, जी सर आर स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट ले लें. स्क्वायर रूट कैन कट गया तो स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 206,400 divided by 84 pi, shift and pi, and the answer is 27.9. So r is equals to 27.9666. तो हम लिख देते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 28.0. So that would be the radius of this cylindrical tank. ठीक है मेरा बेटा? यस सर अब यहाँ पे एक की पॉइंट है. आरोम, प्लीज आरोम एंड क्या नाम है, अलीन एंड एवरीबॉडी विद स्टार्स इन माइंड.
The key point is, might be there is a chance that this cylinder is bigger in size, right, Ramin? जी सर Might be there is a chance that this cylinder is bigger in size than the normal cylinder which is drawn in front of you. Agree? And why? In order to confuse you guys, the examiner gave it to you that the depth of this cylinder is, depth of the water is 84. उसने क्या कहा कि ये 84 है. Agree or not? Yes or no? जी So, सर Arom, beta, this part is also a cylinder. Agree or not? So that is the reason they wanted. They can give you the height straight away of the cylinder 84, but they wanted to check the knowledge that whether you can assume that or not. That the depth of the water in the cylinder is the height of the cylinder itself. Okay, understood? Yes, sir. आप में से किस बच्चे की भी क्लास है? Yes, sir. मेरी है. किस चीज की? Sir, physics की है. इस टाइम पे फिजिक्स कौन सी होती है? Sir, वो crash course start किया है तो वो जो है अभी इस time पे होती है. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, आप लोग जी. जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. इट वाज Thank you, नाइस. sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज.